Assalamu alaikum. This presentation covers lecture 16 and 17 of our course and covers two important topics. The first topic is the representation of a discrete time LTI system in the form of a difference equation, and the second topic is the representation of the discrete time LTI system in a block form or a block diagram form using the difference equation. So far, we have discussed several ways to describe an LTI system. What are those ways? The first is through impulse response. We saw that a discrete time LTI system is exclusively described by the impulse response, and given the input, the output can be predicted by convolving that impulse response with the input, and we can determine our output. The second, as we have covered in lectures 14 and 15, is through a differential equation, and for the discrete time system, as we'll soon see, it is through a difference equation. And the third method, which we'll do in the forthcoming lectures, is through the frequency response using the set of techniques which is known as Fourier techniques, and which I keep on introducing and telling you that we'll soon cover those techniques. Any discrete time LTI system which is causal can be described by a linear constant coefficient difference equation. अगर आप इस नाम पे गौर करें तो ये आपको फेमिलियर लगेगा. इसकी काफ़ी टर्म्स जैसे लीनियर, कांस्टेंट कोफिशिएंट, इक्वेशन अपने कंटिन्यूस टाइम काउंटर पार्ट के कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स इन सिस्टम्स के केस में हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कि कोई भी कंटिन्यूस टाइम सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के केस में हम इसको लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन का नाम दे रहे हैं. तो डिफरेंशियल और डिफरेंस में क्या फ़र्क है? आपको याद होगा जब मैंने आपसे शुरू में डेरिवेटिव या डिफरेंशियल की बात की थी, तो मैंने आपको कहा था कि कंटिन्यूस टाइम में डेरिवेटिव इज़ द रेट ऑफ चेंज, और डिस्क्रीट टाइम में आप डेरिवेटिव को एक डिफरेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और डिफरेंस क्या रिप्रेजेंट करे? चेंज ऑफ दिस सैम्पल फ्रॉम द प्रीवियस सैम्पल. तो आप एक तरह से डिफरेंस को एक डिस्क्रीट टाइम काउंटर पार्ट ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशियल्स ले सकते हैं. अब हम फॉर इंस्टेंस एक सिंपल डिस्क्रीट टाइम सिस्टम लेते हैं, इसको हम एक डिजिटल फिल्टर का नाम देते हैं. व्हाट इज़ अ फिल्टर? ओके, तो फिल्टर मैंने सोचा है कि आपने अभी तक डेफिनेशन सोच ली होगी. फिल्टर क्या होता है? फिल्टर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि सर्टन सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को पास होने दे रहा है और सर्टन सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को पास नहीं होने दे रहा है, अटेन्यूएट कर रहा है या स्टॉप कर रहा है. आप लोगों ने जब सर्किट्स पढ़े हैं तो आप लोगों ने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए कंटिन्यूस टाइम फिल्टर्स डिज़ाइन किए होंगे, जो कि कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स को जॉइन और रेजिस्टर्स को किसी कॉम्बिनेशन में जॉइन करके डिज़ाइन किए थे. तो आपने देखा था कि फ़िल्टर्स को बनाने का एक तरीका क्या है कि यू यूज़ हार्डवेयर और एक फिज़िकल इक्विपमेंट. सिमिलरली जब डिस्क्रीट टाइम फ़िल्टर आप डिज़ाइन करेंगे तो you can either use digital hardware or you can use a digital computer, which is the most common form of digital filter which is implemented. तो हमने कहा कि या तो हम एक डिजिटल हार्डवेयर यूज़ करेंगे या हम डिजिटल कंप्यूटर यूज़ करेंगे. अब दोनों केस में चाहे आप डिजिटल हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं या डिजिटल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, आप सॉल्व कर रहे होंगे एक डिफरेंस इक्वेशन. सॉरी, कोई अजीब सा गोल बना है, लेकिन ऐसा ही गोल बनेगा. तो एक सिंपल आपके सामने इस वक्त इक्वेशन अपीयर हो रही है डिजिटल फिल्टर की, विच इज़ अ मूविंग एवरेज फिल्टर. एंड व्हाट इज़ दिस मूविंग एवरेज फिल्टर डूइंग? द आउटपुट एट एनी पॉइंट इज़ अ सम ऑफ थ्री इनपुट्स: द करंट इनपुट, वन प्रीवियस सैम्पल एंड द सेकेंड प्रीवियस सैम्पल. सो किसी भी टाइम आपकी आउटपुट तीन सैम्पल्स ऑफ इनपुट पे बेस्ड है,
जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं बाय 3 से. सो द नंबर ऑफ सैम्पल्स इज डिवाइडेड the samples, all the samples are divided by the total number of samples. तो सिंपल मूविंग एवरेज फिल्टर जो है ये आपका एक लो पास फिल्टर होता है. ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशंस को स्टॉप करता है. इसी तरह आपके सामने एक और लो पास फिल्टर आ रहा है जो कि निचली इक्वेशन है, which is yn is equal yn minus 0.6 yn minus 1 is equal to x of n. ये फिल्टर जब आप प्लॉट करें तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक लो पास फिल्टर है. अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में आप गौर कीजिए कि पहला एक्सप्रेशन है, इसमें आपके पास yn की सिर्फ एक टर्म है और x of n की 3 टर्म्स हैं, और x of n की x of n वाली टर्म आपको रिप्रेजेंट करिए करंट सैम्पल, x of n minus 1 रिप्रेजेंट करिए एक पिछला सैम्पल, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग दो पिछले सैम्पल्स, और ये डिलेड फॉर्म ऑफ इनपुट्स हैं. दूसरे सिचुएशन में हमारे पास डिलेड फॉर्म ऑफ आउटपुट है, y of n minus 0.6 yn minus 1 यानी y of n का पिछला सैम्पल इज इक्वल टू x of n. तो दोनों सिचुएशंस में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक तरफ y की टर्म्स हैं और एक तरफ x की टर्म्स हैं और वो डिलेड हैं. तो इस डिले की वजह से हम कह रहे हैं कि दिस इज़ अ डिफरेंस इक्वेशन, नॉट अ डिफरेंशियल, दिस इज़ अ डिफरेंस इक्वेशन. तो इसलिए इस तरीके से हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को मॉडल कर सकते हैं by linear difference equations with constant coefficients, because if we look at these two equations we'll see कि जो coefficients केस में वो constant है. जनरल फॉर्म में हम इस इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन, बिकॉज दिस इज अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम और इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं, ए के वाई एन माइनस के, जहाँ वाई एन माइनस के डिलेड टर्म्स ऑफ वाई, करंट टर्म प्लस डिलेड टर्म्स ऑफ वाई को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और राइट हैंड साइड पर आपके पास समेशन बी के एक्स ऑफ एन माइनस के साथ है. अब अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स की तरह डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के लिए भी हमारे कोफिशिएंट्स ए के जो हैं वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कोफिशिएंट्स बी के जो हैं वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के लिए LCCDE इक्वेशन को हम ARMA या ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज इक्वेशन भी कहते हैं. फ़िलहाल आपके लिए इतना काफ़ी है. व्हेन यू विल स्टडी DSP तो आप ARMA या ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज इक्वेशंस या सिस्टम्स को डिटेल में पढ़ेंगे. तो जो डिफरेंशियल इक्वेशंस कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स के लिए रोल प्ले करते हैं, एग्जैक्टली द सिमिलर रोल इज प्लेड बाय डिफरेंस इक्वेशंस फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स. हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंस इक्वेशन. डिफरेंस इक्वेशन को हम या तो टाइम या सैम्पल डोमेन में सॉल्व कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन डोमेन में सॉल्व कर सकते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन डोमेन वाले सॉल्यूशंस आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, so we'll be focusing on the time or the sample domain solutions. किसी भी मेथड से जब हमने डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना हो, हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि कोई भी डिफरेंस इक्वेशन हमें सिस्टम का इम्प्लिसिट रिलेशनशिप बता रही है, यानी वो हमें बता रही है कि इस सिस्टम में इनपुट्स और आउटपुट्स आपस में क्या रिलेशनशिप है. इन कॉन्ट्रास्ट जब हम डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें एक एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप मिलता है, यानी y of n या y of t आपने जैसा डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए देखा था, वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ रहा होता है जो आपको इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप नहीं बता रहा होता, रादर सिर्फ आउटपुट का रिस्पॉन्स क्या है वो आपको पता चल रहा होता है. तो हमें एक डिफरेंस इक्वेशन इनपुट के साथ रिलेशनशिप कैसे बताती है, इसके लिए लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल्स. ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है जो कि एक लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन का है. तो हम अपना पहला वाली एग्जांपल जो कि मूविंग एवरेज फ़िल्टर था उसको दोबारा लाते हैं. इस मूविंग एवरेज फ़िल्टर के लिए हम देखते हैं कि लेट्स से हमारी ए वाली टर्म्स एक कोएफिशिएंट ए था, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वो क्या था. हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो आपके पास के डिले आ रहा होता है वो आपके पास कोएफिशिएंट
का सबस्क्रिप्ट होता है। फॉर इंस्टेंस इस सिचुएशन में हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास y n है जिसमें डिले 0 यूनिट्स का है। तो ये वाला कोफिशिएंट हमारे पास कौन सा कोफिशिएंट है? ए नॉट। तो अगर आपसे पूछें कि इस एक्सप्रेशन में आपके पास ए नॉट क्या है तो वो 1 है। व्हाट इज a1? यानी yn-1 टर्म्स के केस का डिले, तो वो कुछ नहीं है। तो हमारे पास इस इक्वेशन में सिर्फ ए नॉट आ रहा है। लेट्स लुक एट दी बी टर्म्स। व्हाट इज बी नॉट? बी नॉट कोफिशिएंट xn वाली टर्म का होगा। तो ये कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? आई होप आपने 1/3 कहा है और 1 नहीं कहा, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 3 है साथ हमारे, जो कि तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास a1 भी 1/3 होगा और a2 भी 1/3 होगा। एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंस इक्वेशन? वेल यू आर राइट, द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंस इक्वेशन इज 2। जिस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट डिफरेंशियल, इसी तरह डिफरेंस इक्वेशन की टर्म्स में लार्जेस्ट डिफरेंस is the order of the equation. Let's look at the next equation. yn minus 0.6 yn minus 1 is x of n. अब इस एक्सप्रेशन में ए नॉट क्या है? 1, right. What is the coefficient a1? minus 0.6, very good. और हमारे पास b नॉट क्या आ रहा है? 1. And that's it. What is the order of this equation? 1, क्योंकि order of the highest derivative is 1. अब हम जब इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं टाइम डोमेन में, तो we can use either of the two methods. The first is the classical method and the next is the iterative method or the solutions by iteration. So let's start with the classical method. The classical method for solving a difference equation is similar in steps and form to the classical method of solving a differential equation. हमने किस तरह प्रोसीड किया था classical method? Let's say that the general solution can be expressed as a sum of two functions. Yn is equal to yc of n plus yp of n, where yc of n is the complementary solution or the solution due to the initial conditions of the system only. yc solution को हम natural response भी कह सकते हैं. Ypn is the solution, is the particular solution, and it is the response of the system due to the input. So इसको हम forced solution भी कहते हैं. Now, how do we determine the complementary solution or the natural response? We write the homogeneous equation. So we start by writing the homogeneous equation by putting the right hand side equal to 0. So equation 3 is the general form of the LCCDE, और हमने इसमें राइट हैंड साइड या एक्स वाली टर्म्स या इनपुट वाली टर्म्स आपको नजर आ रहा है 0 कर दें. नाउ वी assume let the complementary solution be of the form c z power n, where z is a constant factor. If we say that ycn is czn, what will be ycn minus 1? जहाँ पर भी z की पावर आ रही थी वहाँ पर आपने n को n-1 से रिप्लेस कर लिया. And we can see that in this expression we can separate z minus 1 and let z n remain in the same form. Similarly for ycn minus 2, हमने जब z की पावर zn minus 2 थी तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, and so forth. If we keep on continuing for ycn minus n, we can see that we get z raised to the power minus n into z
की power small n. So we substitute all of these terms into equation 3, and we see that we get an expression of this form. हमने क्या किया है, हमने z power n को कॉमन निकाल लिया. Now since we assumed that the complementary solution or the natural response was of the form z power n, but that means it cannot be 0, which means that we are left with this part of the equation being equal to 0. So we get the characteristic equation. And what is the characteristic equation? हमने जो हमारे पास expression given था, इसमें z की negative powers को positive convert करके we come at this expression. How do we get this expression? We just took all this z minus n common, और जब आपने z minus n common लिया तो आपके पास क्या हुआ, जहाँ पर a नॉट के साथ कुछ नहीं आ रहा था तो वो z पॉजिटिव पावर n आ गया. इसके साथ आपके पास -1 वाले एक्सप्रेशन के साथ n-1 आ गया, एंड an वाला एक्सप्रेशन आपके पास इंडिपेंडेंटली रह गया. Now let's look at the characteristic equation again, क्योंकि characteristic equation बहुत important equation है और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी. अगर हम इस characteristic equation को observe करें तो हम देख सकते हैं कि जो आपका कोफिशिएंट a नॉट है उसके साथ हमारे पास z पावर n अपीयर हो रहा है. What is n? To recall what is n, let's look at the LCCDE equation, which is equation 1 again. हम देख सकते हैं कि जो n है that is the order of the outputs, या the maximum delay the output terms were having. So आपके पास जो भी delay of the system delay of the outputs है, z की वो वाली पावर आपके पास कोफिशिएंट a नॉट के साथ अपीयर हो जाएगी. एंड अगेन कोफिशिएंट a नॉट was the coefficient which was appearing with the zero delay term. Similarly, what is an? An is the coefficient of the maximum delay term, मगर इसके साथ z की कोई पावर नहीं आ रही. So we solve this characteristic equation and we come to have several roots where z1, z2 and till zn are the roots. So an n order equation will have n roots, and an nth order, for example we have fourth order equation, यानी हमारे पास y(n-4) तक टर्म्स थी तो उसके हमारे पास 4 रूट्स आ रहे होंगे. अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है यानी हमारे पास yn-1 और yn-2 एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास 2 रूट्स आ रहे होंगे. तो ये रूट्स रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. इनकी दीज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, they occur in conjugate pairs. So if the roots are non-repeated, they are not repeated, they are unique, means z1 और z2 और zn सब different और distinct हैं, तो हमारे पास general expression y of n can be written as y c of n is c1 z1 raised to the power n plus c2 z2 raised to the power n and so forth. The second part of the solution is finding the particular solution or the forced response. Again, the procedure is similar to what we did for solving the differential equations. We say that the forced response, it has a form similar to the excitation or the input. So say we have, I'm giving 3 examples. For example, if your input is a constant, so your particular solution will take the form of a constant. Let's say that your input is an exponential term, so the forced solution will take the form of the exponential, the same exponential
will appear in the particular response. Or say your excitation or the input is in the form of a sinusoid. So your output will take the particular solution will take the form of a sinusoid, but in this case both cos and sin will appear. आप लोग और कीजिए अगेन लाइक डिफरेंशियल इक्वेशंस. हम लोगों ने कांस्टेंट c को कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और कोफिशिएंट p या कांस्टेंट p को पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए रखा है. So this solution procedures can be only applied if the input is a finite number of terms. If the input is an infinite number of terms तो हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हमारे कोर्स में हम finite number of inputs ही assume कर रहे होते हैं. So how do we solve this expression then? हम yp की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपनी इक्वेशन में we determine the coefficient p. Part 3, coefficient evaluation. But which coefficient is this? The constant coefficient c, or the coefficient which was coming from the complementary solution. So we'll use the initial conditions to solve for the unknown coefficients of the natural response. आप लोगों को याद होगा हमने जिक्र किया था कि जितने unknown coefficients c होंगे उतनी ही initial conditions हमारे पास given होंगी. Otherwise it will not be possible for us to determine all the coefficients. So let's apply this procedure to solve this example. हमें नज़र आ रहा है कि ये एक सिस्टम है yn minus 0.6 yn minus 1 is equal to x of n, where the input x of n is 4u of n or unit step response multiplied by 4. जब हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि the order of the system is 1 because the maximum delay is 1. So since we are following the traditional method or the classical method, we'll do 3 steps. The first step is determination of the complementary solution, second step is determination of the particular solution, and the final step is determination of the constant term for the complementary solution. तो complementary solution और natural response के लिए हम क्या करते हैं? We form the characteristic equation और हम उसके लिए input वाली terms को 0 कर देते हैं. Now let's assume that the complementary solution is of the form c z raised to the power small n. So I hope you remember the procedure which was outlined in slide 7. उसमें क्या था? आपने देखा कि आपका कैपिटल N या मैक्सिमम डिले ऑफ द आउटपुट टर्म्स क्या है, तो आपको नज़र आ रहा है 1 है. तो हमारे पास z की मैक्सिमम पावर 1 आएगी जो कि किस एक्सप्रेशन के साथ आएगी? a नॉट के साथ, और a नॉट इस सिचुएशन में 1 था. तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन z minus 0.6 is equal to 0 बन जाएगी. In case you are not clear about this step, what you can do is follow a procedure like slide 6 and 7. आप सब्स्टिट्यूट करें c z to the power n. उसके बाद after substitution you take c z to the power n common, then you make the negative powers positive, so you'll come at the same expression as this one. या आप शॉर्टकट अप्लाई करें या एक आध दफ़ा प्रैक्टिस के लिए तमाम प्रोसीजर को ऑन द स्लाइड 6 and 7 दोबारा से कर लीजिए. But this is the characteristic equation and this gives us c is equal to 0.6. Next step, natural response हमारे पास यानी क्या हुआ? ycn is equal to c 0.6 raised to the power n. This is to be determined. Next step, forced response. Now the forcing function is a constant. The unit step is a constant function. So we'll assume that the forced response or ypn is of the form p. What happens when you delay p? If you delay p, what do you think is going to happen? It will remain p. So हमने क्या किया? हमने इस इक्वेशन में जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें y of n को yp of n से सब्स्टिट्यूट कर लिया और आपको यहाँ नज़र आ रहा है राइट हैंड साइड पर मैंने u of n हटा दिया.
and I substitute p for yp of n, and I substitute p for ypn minus 1 again, because as I told you, p delayed is also p. So we get p minus 0.6p is equal to 4, which gives us p is equal to 10, and we get ypn is equal to 10. Step 3 is determining the overall response, और इससे हम अपना constant for the natural response determine करते हैं. तो overall response के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम overall response के लिए y of n में yc of n और yp of n दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जिससे हमें y of n मिल गया. अब अगर हम इस क्वेश्चन पे गौर करते तो हमें नज़र आ रहा था कि इस क्वेश्चन के साथ कोई इनिशियल कंडीशंस नहीं गिवन. तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि द मोमेंट इनपुट इज़ अप्लाइड, आपको y of n की आउटपुट मिलना शुरू हो गई. अब इस क्वेश्चन में इनपुट हमारे पास क्या थी, x of n 4u of n, और आप कह रहे हैं जैसे ही आपने इनपुट अप्लाई की आपके पास आउटपुट अपीयर होना शुरू हो गई. तो y of 0 क्या हो जाएगा, 4 इंटू u of n, या u of 0 की क्या वैल्यू आती है, 1, because we said that a unit step function is 1 if n is greater than or equal to 0. If n is equal to 0, u of n or u of 0 is equal to 1, and 4 into 1 is 4. So हम कहते हैं कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन y of 0 is equal to 4 गिवन होगी. अब हमारे पास चूँकि y of 0 4 गिवन है, तो हम इस इनिशियल कंडीशन को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हमारे y of n के एक्सप्रेशन में, और इससे हम हमारा c को डिटरमिन कर लेते हैं, which comes out to be -6. हम c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, y of n के एक्सप्रेशन में, और इसमें हमारे पास ओवरऑल हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन आ जाता है, जो कि y of n is equal to -6 into 0.6 to the power n plus 10. Now this procedure is similar to what you did for your solution of differential equations. I'll suggest you guys to go through this example yourself. इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एक दफ़ा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए, and I'm sure that you'll be able to do it. It is not difficult, but it just needs practice, and I told you that practice makes one perfect. So इसकी प्रैक्टिस के साथ हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं. से हमारे पास now y of n minus 0.7 y of n minus 1 is equal to e minus n u of n. And now we are, luckily for us, we are given an initial condition y of minus 1 is equal to 0. So we'll be going through again 3 steps. The first step is the determination of the complementary solution. Complementary solution के लिए हम right hand side इनपुट के लिए हम 0 कर लेते हैं, and we assume that yc of n is actually from cvn. From the characteristic equation, and we get c is equal to 0.7. So ycn is equal to c into 0.7 raised to the power n. Again, since it's the first order equation, we'll only have one rule. Second step is determination of the particular solution. Now we see that our input is actually from c raised to the power -n. So we'll assume that our particular solution will have a similar form, and it will be c e raised to the power -n. So what will be y c n minus 1? जहाँ भी n आ रहा है वहाँ पर हमारा n minus 1 आ जाएगा. So we just substituted or replaced n by n minus 1, and we get this expression c e minus n into e to the power 1. We substitute these values into the expression for particular
we solve it and we'll get a value for p which is equal to minus 1.108, which will give us ypn is equal to minus 1.108 e to the power minus n. Overall solution is determination of constant. What steps do we follow for determination of overall solution? We substitute both the complementary solution and the particular solution into the expression for y of n. Then we use the initial condition, and wherever we have n in the expression, we'll replace this n by minus 1. And we solve. So we'll get a value for c which is equal to 2.108. And eventually we get our overall solution. I'll suggest you guys to again solve this numerical yourself. Just give this example and solve it, and I'm sure you'll be able to do this. Just don't look at the slides while solving this example by yourself. I've also mentioned some practice problems at the end of this lecture, in fact set of lectures, both these lectures, so you can go through those examples or those practice problems. And in case you have any difficulty, you can always call me on WhatsApp and discuss during the daytime. So the procedure we discussed so far was when the roots of characteristic equation were distinct. हमने देखा था कि अगर हमारे पास z's सारे distinct या different आ रहे थे तो हमारे पास complementary solution किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. What happens if the roots are not distinct? So let's look at the characteristic equation again, जो कि I'm sure आपको अभी तक फॉर्म करनी आ गई होगी given a difference equation. And otherwise, what we had said, if the roots were distinct, the solution of the characteristic equation was of this form. But if the roots are not distinct and they are repeated, say for a fourth order equation, 3 roots are repeated. That is, we have z1, z2 and z3 common. So the characteristic equation will be something like this, and the roots are this z1 is repeated 3 times and this is z minus c1 cube. So the natural response will be of the form, we'll have c1 and then with c2 we'll have an n, and with c3 we'll have n square, z1 raised to the power n. So we'll have 3 constants as expected. ज़ाहिर आपके पास अगर 3 रूट्स हैं तो 3 ही कॉन्स्टेंट्स होंगे, और एक कांस्टेंट के साथ आपके पास कोई n नहीं आ रहा, दूसरे के साथ सिंगल n आ रहा, और तीसरे के साथ n की स्क्वायर फॉर्म आ रही है. एंड सिंस c4 रूट वाज डिस्टिंक्ट तो वो हमारे पास प्योर फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है. रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन इज सिमिलर. हमने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को इस फॉर्म में अज्यूम करना है. कांस्टेंट डिटर्मिनेशन या पर्टिकुलर सोल्यूशन या ओवरऑल सोल्यूशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Okay. The second way to solve a difference equation is iteratively or through an iterative solution. Iteration क्या होता है? Iteration का try. कोई एक चीज़ आपने एक बार की, 2 बार की, आप ना iterative बार कर रहे हैं, आप iteration कर रहे हैं. Iteration से जनरली क्या होता है? जब आप पहली दफ़ा कोई काम करते हैं तो आप इतने एक्सपर्ट नहीं होते. दूसरी दफ़ा किया बेहतर हुआ, 5-6 दफ़ा किया काफ़ी बेहतर हुआ. तो आइटरेटिवली आप बार बार करके इम्प्रूव करते हैं, तो बार बार आप सोल्यूशन भी इसी तरह डिटर्मिन कर सकते हैं. तो जब हमने आइटरेटिव सोल्यूशन डिटर्मिन करना है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इक्वेशन को रीअरेंज कर लेना. हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन yn की टर्म्स एक साइड पे थी और x ऑफ n की टर्म्स राइट हैंड साइड पे थी. हमने इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया और हमारे पास y ऑफ n अब इंडिपेंडेंटली रह गया. अब हमने क्या किया? अब हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और y ऑफ n की वैल्यू डिटर्मिन करनी है. फॉर एग्जांपल y की पहली वैल्यू क्या होगी?
हमने n को 0 डाल दिया और डिटर्मिन करने की कोशिश की, तो y ऑफ -1 हमारे पास कुछ नहीं था, 0 था, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास 0 हो गया. u of 0 is 1 and 4 into 1 is 4. What's the next value of y? हमने इस एक्सप्रेशन में 1 डाल दिया, जो हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन था. अब इसमें n की वैल्यू हमने 1 डाल दी, तो हमारे पास 0.6 into y of 1 minus 1 which is y of 0 plus 4 आ गया, क्योंकि साथ हमारे पास u of 1 आ रहा है, u of 1 तो 1 ही है. ना y of 0 की वैल्यू हमारे पास पिछले स्टेप से क्या आ रही थी, 4, तो हमने यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास y of 1 की वैल्यू 6.4 आ गई. सिमिलरली y of 2 के लिए हमने अगेन जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था ऊपर वाला, ये वाला एक्सप्रेशन, इसमें अब हमने n को 2 डाला और हमारे पास y of 1 की पिछली वैल्यू, ये वाली वैल्यू यूज़ हो रही है. जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास y of 2 7.84 आ गया. अब आप आइटरेटिव सॉल्यूशन से आप देख रहे होंगे कि हमें y of n का कोई कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा, लेकिन हमें y of n की डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ मिल रही हैं. आप इस आइट्रेशन को कंटिन्यू करते जाएं, आइटरेटिव प्रोसीजर को, और आपको हर स्टेप पिछले स्टेप की वैल्यू यूज़ करके एक सॉल्यूशन दे रहा होगा. कितने पिछले स्टेप्स आपको चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम. अगर 2 होता तो हो सकता आपको 2 प्रीवियस वैल्यूज रिक्वायर्ड होती. अब हम देखते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन सिमिलर है टू द सॉल्यूशन वी हैव डिटरमिन्ड थ्रू द क्लासिकल वे. तो क्लासिकल सॉल्यूशन हमारे पास ये था जो भी हमने डिटरमिन किया था. तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास. अब इसमें भी हम ऐसा करते हैं, n की वैल्यू 0, 1 और 2 डाल के देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आता है. जब हमने n की वैल्यू 0 डाली, सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि ये हमारे पास एक कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशन था और इसको कोई प्रीवियस वैल्यू नहीं चाहिए थी, तो हमें 4 मिला. Simply by substituting values n is equal to 0. When we say n is equal to 1, we put n is equal to 1 in this expression, the given expression, and we get 6.4. And when we put y2, n is equal to 2, we get 7.84. So we see that both these expressions or both these methods lead to similar values of y. What is the advantage of using the classical method? हमें एक कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशन मिल रहा है and we don't need any previous value of y to determine the current value of y. Iterative solution का क्या advantage है? You don't have to go through all this hard work, तीन steps, complementary solution, particular solution, and again हमारे पास overall solution. आप जनरली आपके अगर प्रीवियस वैल्यूज अवेलेबल हैं तो आप नेक्स्ट वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं. बट वी सी दैट बोथ दीज सॉल्यूशंस लीड टू द सिमिलर वैल्यूज ऑफ y फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n. Now this brings us to the third way to determine the stability of a discrete time system. थर्ड वे से पहले हम पिछले दोनों वेज रिवाइज कर लें. व्हाट वाज द फर्स्ट वे? फर्स्ट वे था, अगर हमारे पास y ऑफ n और x ऑफ n गिवन है, एक एक्सप्रेशन, एंड इफ वी से दैट द इनपुट इज बाउंडेड, तो हमारे पास y of n shouldn't be unbounded for any value of n. If y of n gets unbounded for any value of n, then that means that the system is unstable. So we define that stability criterion as bounded input, bounded output stability. It should be kept in mind that whenever we are checking the stability of any system, the input will always be assumed to be bounded. अगर input bounded नहीं है या उसका लेवल किसी एक मैक्स लेवल से कम नहीं है बल्कि input infinite हो रही है, then we cannot check the stability of a system. Because input ही आपकी out of bound हो गई है. So input will always be bounded. We'll see
that for any value of input, whether the output gets unbound or not. Okay. Second method. Second method was if we are given the impulse response or Hn of the system, if h of n is absolutely summable, then that means that your system is stable. Third way, any idea? I'm sure idea आपको आ गया होगा क्योंकि हमने continuous time systems के लिए stability के third criteria define कर लिया था. So that stability criteria was defined from the characteristic equation and the natural solution. So naturally इधर भी कुछ ऐसा ही होगा. So we say that now we have an idea. We think that जो आपका stability है system की और difference equation given है, it has to do something with the natural response, and the natural response has a form Ci is Ci into Zi raised to the power n. इतने सारे i's क्या आ गए? Ci is the constant, Zi is the root, ith root, and n was the power जिससे हम इसको जो हमारे solution की form में आ रहा था. So we saw that the root Z was a function of the structure of the system and it was independent of the input or the initial conditions. आपके पास structure of the system यानी delay की terms के through आपके पास root Zi आ रहा था. The magnitude, what is the magnitude of the root? It is given by magnitude of Ci into magnitude of Zi. If since Ci is a constant, so constant will remain constant no matter what values of n you take. But if Zi is less than infinity, then this term will approach 0 as n approaches infinity, because Zi is a power and we are saying that Zi, we will say that Zi is positive. So अगर आप किसी पॉजिटिव चीज़ को n की पावर्स दे रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ को पावर दे रहे हैं तो बढ़ती जाती है. तो when does this decrease? अगर आपके पास Zi का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, यानी इसका मैग्नीट्यूड अगर स्मॉल है और स्मॉल चीज़ को आप हाई पावर दे रहे हैं, फ्रैक्शन को या डेसिमल को, तो वो छोटे से छोटा हो जाता है and eventually it decreases. So this means that the magnitude of Zi should be less than unity. If it is greater than unity, यानी आपने पॉजिटिव चीज़ को पावर दी, तो this magnitude will get unbound as n approaches infinity. Since we know that the force response is of a similar form as the input, तो अगर आपके पास input bound है तो particular solution bound है. That means that the stability of the system of the difference equation depends upon the roots of the characteristic equation, and if all of the roots are less than 1, then each term of the natural response is bounded, and that means that the necessary and sufficient condition that a causal LTI system is BIBO stable is that Zi should be less than 1, magnitude of Zi should be less than 1, or all roots should be less than 1. यहाँ पर हम लोग अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल लाते हैं, जिसमें अगर आपके पास सिस्टम में 4-5 रूट्स हैं और कोई एक भी रूट ग्रेटर देन 1 है इसका मैग्नीट्यूड, तो आपका सिस्टम ओवरऑल अनस्टेबल होगा. हमने जिक्र किया था पहले भी कि ऐसा नहीं होता कि 3-4 रूट्स जो हैं वो लेस देन 1 और सिर्फ एक ग्रेटर देन 1 हुआ तो आपने कहीं ओवरऑल सिस्टम स्टेबल हो गया. कोई एक चीज़ भी अगर हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करी क्राइटेरिया को, तो हम कहेंगे हमारा सिस्टम अनस्टेबल है. सो इस स्टेबिलिटी की कंडीशन को हम ये भी कह सकते हैं, या हम सोच रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि y ऑफ n जो है दैट शुड अप्रोच 0 एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी, या y ऑफ n का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास एब्सोल्युटली समेबल है. तो y ऑफ n इसको ओवरऑल हम कह सकते हैं y ऑफ n अप्रोचेस 0 एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी, या और y of n approaches a constant, not 0. Y of n approaches a constant, or it has a constant value as n approaches infinity. Let's
solve an example to reinforce this concept. Suppose that we have a causal system which is described by the difference equation, this, and we have to check whether the system is stable or not. So how do we check the stability? We will follow two steps. And what are these two steps? First of all, we'll write the characteristic equation of the system, and second step, we'll find the roots of the characteristic equation. If the magnitude of all the roots is less than 1, we'll say that the system is stable. So firstly, let's form the characteristic equation. We have seen through two examples, and one description how to form a characteristic equation. And what was the way? We see the maximum delay of the system, of the output of y. So the maximum delay is 2. That means the maximum power will be z square. And what coefficient will z square appear with? It will appear with this coefficient, right? It appears with the a naught coefficient. So we'll have z square minus 1.25z plus 0.375 is equal to 0. And once we solve this characteristic equation, we get two roots, z is equal to 0.75 and 0.5. We see that the magnitude of both these roots is less than 1. So we can say that y of c n will approach 0 as n approaches infinity, since both roots are less than 1, and hence our system is stable. In case either of 1 or 2 or both of these roots were less than 1, then our system would have been unstable. Now any discrete time system expressed by a linear constant coefficient difference equation can be represented in a block diagram form. जैसा कि हमने जिक्र किया था कि एक LCCDE इक्वेशन, एक डिफरेंस इक्वेशन आपको एक इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन देती है या आपको बताती है कि इनपुट्स और आउटपुट्स आपस में किस तरह से बिहेव करके आपको ओवरऑल सिस्टम का रिस्पॉन्स दे रहे हैं. तो अगर आपके पास एक्सप्रेशन के सिस्टम का एक डिफरेंस इक्वेशन की फॉर्म में हो तो आप इस एक्सप्रेशन से उस सिस्टम को विजुलाइज कर सकते हैं थ्रू अ ब्लॉक डायग्राम फॉर्म. यही प्रोसीजर आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए भी देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आप किसी ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इसी तरह डिस्क्रीट टाइम और या डिफरेंस इक्वेशन को भी आप एक ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसके लिए 3 ब्लॉक्स आपको ज़रूरत होगी, 3 ब्लॉक्स रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि एक इक्वेशन में 3 ऑपरेशंस हो रहे होते हैं. उनमें मल्टीप्लिकेशन हो रही होती हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की आपके इनपुट्स और आउटपुट्स के साथ. इनपुट्स के केस में b कोएफिशिएंट्स और आउटपुट्स के केस में a कोएफिशिएंट्स. फिर एडिशन हो रही होती है a नॉट y ऑफ n प्लस a1 y ऑफ n माइनस 1, तो एक एडिशन हुई. तो समर्स चाहिए आपको, और y ऑफ n माइनस 1 के लिए आपको डिले के लिए कुछ चाहिए. तो हमारे पास यानी 3 सर्किट एलिमेंट्स हैं. एक एडिशन के लिए एडिशन या एडर को हम एक सर्कल से एक्सप्रेस करते हैं और सर्कल के साथ आपको नज़र आ रहा होगा सर्कल के अंदर एक प्लस का साइन है और प्लस का साइन आपको बता रहा है कि आपके पास एडिशन ऑपरेशन हो रहा है. नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर या कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए मल्टीप्लायर चाहिए होता है. मल्टीप्लायर को आप एक एरो के साथ डिपिक्ट करते हैं और एरो हेड के ऊपर आपने मल्टीप्लायर जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो लिखा होता है. एंड थर्ड इज़ अ डिले एलिमेंट. डिले के लिए आप एक स्क्वायर ब्लॉक यूज़ करते हैं जिसमें डिले होता है. अगर आपके पास इनपुट डिले की x ऑफ n हो तो डिले होकर आपको आउटपुट x ऑफ n माइनस 1 मिल जाती है. इसी तरह अगर स्केलर से मल्टीप्लिकेशन से पहले आपके पास इनपुट x ऑफ n है तो स्केलर से मल्टीप्लिकेशन के बाद ax ऑफ n मिल जाती है, और एडिशन ऑफ सिग्नल्स के बाद आपको आउटपुट दोनों का सम मिल रही होती है.
तो इन कॉन्सेप्ट्स को लगाकर हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं थ्रू आउट दिस lecture. Let's solve that example and make a block diagram of the circuit. Let's solve this example to reinforce the concept. हमारे पास y of n given है in the form y of n minus 0.6 yn minus 1 is equal to x of n. तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, y of n को एक साइड पे ले जाना है, लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले गए. अब हमें नज़र आ रहा है जो हमारी आउटपुट y of n है वो हमारे पास डिलेड आउटपुट और इनपुट का सम है. यानी इसका मतलब ये हमारे पास एक तरफ से कहीं से इनपुट आ रही होगी x of n, और हमारे पास कहीं से आउटपुट आ रही होगी से y of n, बल्कि y of n चूँकि आउटपुट है तो y of n इस तरह आएगा. और हमारे पास एक इसको डिले हमने करना है, और डिले कैसे करना है, y of n के साथ हमने डिले एलिमेंट असाइन किया, डिले किया, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया 0.6 से, 0.6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और इसको हमने फिर ऐड कर दिया x of n के साथ. यानी x of n था, साथ ऐड कर दिया. तो कुछ इस किस्म की चीज़ बननी चाहिए. तो यहाँ पे ज़ाहिर y नहीं रह जाती, ये दोनों मिलकर हमें क्या मिल रहे हैं, y of n. तो that's how this circuit is made. This block diagram is made in fact. आपको नज़र आ रहा होगा अब ब्लॉक डायग्राम कि y of n जब डिले हुआ तो हमारे पास डिलेड टर्म मिल गई, इसका x of n ऐड हुआ और हमारे पास हमारी आउटपुट आ गई. अब जो ये y of n की आउटपुट डिले होकर आपको पीछे मिल रही थी, इसको, इस प्रोसेस को या इस स्टेप को हम फीडबैक कहते हैं, क्योंकि आपकी आउटपुट फीडबैक हुई है, तो इस पाथ को हम फीडबैक पाथ भी कहते हैं. अगर हम फीडबैक पाथ को ऑब्जर्व करें तो हमें नज़र आ रहा होगा कि फीडबैक पाथ में जो एक्सप्रेशन है 0.6, ये ओरिजिनल इक्वेशन में जो इसका साइन था, अगर आप देखते तो -0.6 के साथ है, तो उस ऑपोजिट साइन आ रहा है. क्यों आ रहा है, क्योंकि हम सारी एक्सप्रेशंस को राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन पे ले गए थे. तो जब हमने ब्लॉक डायग्राम बनानी है तो हमने थोड़ा सा कॉन्शियस होना है और हमने इस चीज़ को ध्यान में रखना है. अगेन एंड में जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं उनमें आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो इसको कवर कर रहा है. तो हम इस कॉन्सेप्ट को अगेन रीइंफोर्स करने के लिए लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल. हमारे पास से ये सिस्टम गिवन है और हमने इसकी ब्लॉक डायग्राम बनानी है. अब हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक फीडबैक टर्म है ये वाली और एक फीड फॉरवर्ड टर्म है. लेकिन इन टर्म्स से पहले हमने पहला एक्सप्रेशन क्या करना होता है, पहला स्टेप ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले गए, y of n एक साइड पे ले गया और हमारे पास बाकी सारा एक्सप्रेशन राइट पे चला गया. अब मैं चाहूँगी कि आप इस पॉइंट पर इस वीडियो को पॉज करें और इस डायग्राम को खुद बनाने की कोशिश करें. आई होप आप ये करेंगे और आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास ब्लॉक डायग्राम इस फॉर्म में आ रही है. गुड. दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ चैप्टर 2. ये न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन के लिए सॉल्व करने हैं. इनमें से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बुक की है और बाकी 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं. आई होप आप इनको प्रैक्टिस करेंगे एंड अगेन एज आई सेड अर्लियर, इन केस यू हैव एनी डिफ़िकल्टी वी कैन ऑलवेज डिस्कस इट. चैप्टर 2 आपने देखा था डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस टाइम LTI सिस्टम्स को कवर कर रहा था, और हमने देखा था कि हम किसी भी LTI सिस्टम को मुख्तलिफ वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक वे में हमारे पास h of n सिस्टम रिस्पॉन्स गिवन था और दूसरे वे में हमारे पास डिफरेंशियल या डिफरेंस इक्वेशन गिवन थी. हमने देखा कि हम इन दोनों वेज के थ्रू
आउटपुट वाई ऑफ एन को डिटर्मिन कर सकते हैं एक एक्सप्लिसिट फॉर्म में जो कि इंडिपेंडेंट है ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द सर्किट। हमने कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ देखी, हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स की प्रॉपर्टीज़ देखी। आई होप you'll keep on practicing these properties क्योंकि also all these questions, क्योंकि हमारे पास शायद क्विज़ का टाइम ना हो, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ज़्यादा असाइनमेंट्स दूँ ड्यूरिंग दिस क्वारंटीन पीरियड, एंड आई होप कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इस कोर्स को। आफ्टर दिस स्लाइड मैंने जो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे वो मैंने डाले हैं, आप उन न्यूमेरिकल्स को करते हैं। अगर आप